नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त केमी अच्छा आपण मानक स्वागत करुँच आम ओडिया पाठशाला को आपण मैंने आशा करुँच भल थे मुझे बहुत ही भल अच्छी। तो आज क्लास 12th +2 सेकेंड इयर CHSE डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ी नी छाड़ी किसी दिन है 11th वीडियो टी अपलोड करूली तो 12th वीडियो करने पॉसिबल हो नाला। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स डबल फर्टिलाइजेशन आज स्टार्ट करवा। तो आउ जी भी अच्छी भावुँ धीरे धीरे कंप्लीट करदेवी आ क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करदेवी। तो डोंट वरी। तो देखो जदि आपण मैंने मत कमेंट रे कहे कि मुझे नोट्स रे पढ़ेबी ना बुक रू पढ़े बुक रू पढ़े वीडियो बहुत लेंथी हो जाऊँगी तो प्रॉब्लम बहुत होउची। Double fertilization. After entering on one of the synergids, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergid. मैंने आगे तो एंटर करी कौन हम ये देखो synergid ठीक अच्छे। One of the male gametes moves towards the egg. दीटा मेल गैमेट से फॉर्मेशन कर गैमेट से रिलीज कर गोटे जीव एग आड़ को आउ एग सेल एंड फ्यूजेस विथ द न्यूक्लियस विथ द कंप्लीटिंग द सिनगैमी। एग सेल सांगे फ्यूज हो कंप्लीट है कहते सिनगैमी। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल द जाइगोट। डिप्लॉयड सेल माने जाइगोट। The other male gamete moves towards to the two polar nuclei located the central cell, fuses with them to produce triploid by primary endosperm nucleus PEN ताको कहा जाए मन रखता primary endosperm nucleus PN produce करिबो। तो as the involves the fusion of 3 haploid nuclei it is termed triple fusion। जेतल तीनटा haploid nuclei से इनवॉल्व भाव फ्यूजन है तो सेटा को कौन कहते ट्रिपल फ्यूजन कहते। से टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक द फेनोमेनन इज टर्म डबल फर्टिलाइजेशन। माने से कहला कि दुईटा टाइप फ्यूजन थाए गोटे सिनगैमी गोटे ट्रिपल फ्यूजन। तो ये टर्म टाक कहते दुईटा टाइप फ्यूजन थाए बोली टर्म टाक कहते डबल फर्टिलाइजेशन। An event unique to flowering plants, the central cell after triple fusion becomes primary endosperm cell PEC. PEN PEC primary endosperm cell and develops into the endosperm while the zygote develops into an embryo. डिजेनेरेटिंग सिनर्जिड तापर जाइगोट एटा 2n तापर पोलर न्यूक्लियर एटी पोलर न्यूक्लियर पाखे आसिकी प्राइमरी एंडोस्पर्म 3n हम तो यही दुईटा फर्टिलाइजेशन हुए से कहते कौन ना डबल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट ग्लोबुलर एम्ब्रियो ये देखो ग्लोबुलर एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड होता से एम्ब्रियोटा कहते तार सस्पेंसर एटा सस्पेंसर रेडिकल कटिलिडन प्लूम्यूल ये मझीटा प्लूम्यूल कहते मैच्योर अच्छी एटा ग्लोबुलर एम्ब्रियो fertilized embryo sac showing zygote formation endosperm nucleus by PEN। तब रहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन आम प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ले फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ले पढ़े पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स को स्ट्रक्चर होची कौन इवेंट्स से जाऊँगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन रे। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओभारी इनटू फ्रूट। माने आम जो पढ़ते फास्ट कौन ओभारी ओभारी भितर अच्छी कौन ओव्यूल तो मैंने ओव्यूलटा कन्वर्ट हम कौन ना सीड्स रे ओभारीटा कन्वर्ट हम फ्रूट रे मन रखी था ओव्यूलटा कन्वर्ट हम सीड्स रे ओभारी कन्वर्ट हम फ्रूट्स रे है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट व्हाई कौन पाई एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स ए ट्रिप्लॉइड endosperm tissue. The cells of this tissue are filled with reserve food materials and used for the nutrition of the developing embryo. In the most common type of endosperm development by the PEN undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm.
Subsequently, cellular formation occurs and the endosperm becomes cellular. The number of free nuclei found before cellularization varies, varies greatly. The coconut water from tender coconut that you are similar with is nothing but free nuclear endosperm, माने जो made up of thousands of nuclei ये सब coconut water एटा कौन free nuclear endosperm and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. water टा है free nuclear endosperm आउ जो white kernel टा थाए सेटा होच कौन ना cellular endosperm. एटा था plumule, cotyledons, hypocotyle, radicle, root cap. Endosperm may either be completely consumed by developing embryo by pea, groundnut, beans, etc. before seed maturation, or it may persist in the mature seeds, castor and coconut, and be used up during seed germination. Split upon some seeds of castor, peas, bean, groundnut, fruit of coconut, and look for the endosperm in each case. Find out whether the endosperm is persistent in cereals, wheat, rice and maize. ठीक अच्छे ये सब जिनस थाए तापर एम्ब्रियो embryo कौन देखिए हमें embryo develops at the micropylar and the embryo sac where the zygote is situated. micropylar end रे कौन हुए ना embryo develops हुए the zygote situated where embryo sac where the zygote situated. Most zygote divide and only after certain amount of endosperm is formed. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development embryogeny are similar in both monocotyledons and dicotyledons. Monocotyledons and dicotyledons. 1.13 देखो 1.13 depicts the stages embryony. In dicotyledons embryo, the zygote gives rise to the proembryo and subsequently in the globular heart-shaped mature embryo. सेटा हम देखिले 1.3 structure a typical dicotyledons embryo figure 1.14a starting रो जो हम पढ़ी जो एटा देखंतु एटा plumule तार एटा होची dicotyledons दीटा तार अछि consist of an embryonal axis, two cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is the epicotyle, which terminates with the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledons is hypocotyle that terminates at the lower end in the radical root tip. The root tip is covered with a root cap. Embryo of monocotyledons by 1.4b 14b एटा होची मोनोकोटिलिडन आ स्ट्रक्चर सब टिके मन रखि देथिबो processes only one cotyledon in the grass family. The cotyledon is called scutellum, that is situated towards one side of the embryonal axis. At its lower end, the embryonal axis has the radicle and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleoragia. The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. Epicotyle has a shoot, apex, and a few leaf primordia, primordia enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile. Sac of few seeds in water, ଯେମିତିକି ସେ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଜ୍ ପିସ୍ ଚିକପିସ୍ groundnut ଏସବୁ overnight the spilled the seeds and observe the various parts of the embryo and the seeds. तापर सीड्सटा टिके बड़ अच्छी तो सीड्सटा आम आउ गोटे क्लास ना सीड आउ एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी ए दीटा बस ये सीड्स आउ एटा गोटे क्लास जीव तो तापर क्वेश्चन आंसर आउ गोटे क्लास जो क्वेश्चन आंसर केतेटा अछि 18
आउ 4टा क्लास रे एटा कंप्लीट टोटली सारदेवी मु कंप्लीट करदेवी तो व्यस्त हुंतुनी तापर आमर अच्छी सब जी आउ जी चैप्टर अच्छी ह्यूमन प्रोडक्शन है कि किसी है तो आग मुझे चैप्टर सब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेबी करे सारा पर मुझे सेकंड चैप्टर को जी तो आपण मैंने जब वीडियो रे नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ सांग शेयर करूँ यदि वीडियो भल लगे तो कमेंट करूँ तो से पर्यंत मुझे धन्यवाद।